So in this lecture we are going to discuss the BCS theory of superconductivity. This is the most successful and fundamental theories in the field of superconductivity. So this theory is known after your Bardeen, Cooper and Schrieffer. B stands for Bardeen, C stands for Cooper and S stands for Schrieffer. So they devised a very important and very fundamental theory in which the superconductivity is based on the electron phonon electron interaction in which the Cooper pairs are formed. The Cooper pairs are basically the pair of the two electrons which interacts by the phonon absorption and emission, or you can say the intermediatry particle is phonon, and the interaction between the two electron is attractive. So which is you can say in general when two electrons, because both are of same charge, therefore their interaction should be repulsive. But it is in free space when the two electrons meet, they repel each other. But in case of solids that crystal have periodicity, that means electron is moving in your periodic potential. So therefore this periodic potential modified the interaction between electrons. That means the interaction becomes attractive. So that these pairs of electron which have attractive interaction, so this pair is known as your Cooper pairs. सो कूपर पेयर का जो हम बोल रहे हैं इंटरेक्टिव होता है वो कैसे होता है, वो हम इधर से समझते हैं कि लेट अस कंसीडर ए lattice. So these are your iron cores of lattice. So when what happens when electron passes through this, तो इलेक्ट्रॉन इस इन आयंस में से पास हो रहा है तो क्या करेगा, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे, दे विल, तो सो इलेक्ट्रॉन विल डिफॉर्म दिस लेटाइस. तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के नज़दीक आ जाएंगे तो लेटाइस विल बी डिफॉर्म्ड. सो दिस इज द डिफॉर्म्ड रीजन. सो क्या होगा, दिस डिफॉर्म्ड रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, आयन डेंसिटी क्या, पॉजिटिव आयन डेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट विल इंक्रीजेस. सो इन दिस वे मोमेंटम इज इम्पार्टेड टू दीज आयंस. तो ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे तो देर विल बी मोमेंटम, क्या होगा, मोमेंटम विल इम्पार्टेड टू द आयन बिकॉज ऑफ दिस attractive interaction. And in this impartation of momentum will causes these ions to move together due to the elastic behavior of lattice. So thus this slight movement together increases the positive charge density. Positive charge density increase हो रही है इस attractive interaction की वजह से in this region. So this region of increased positive charge density then propagates as a wave, because movement हो रही है तो there you can say that their movement propagates as a elastic wave. So you can say there is lattice vibration is taking place here, so which carries a momentum through the lattice. Therefore lattice vibration है, यहाँ पे lattice vibration हो रही है, means ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे फोनोन एक हो रहा है, इमिट हो रहा है, मतलब फोनोन प्रोड्यूस हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव इंट्रैक्शन की वजह से. सो द फोनोन इज प्रोड्यूस्ड हियर एंड लेटाइस इज बीइंग डिफॉर्म्ड. सो व्हाट हैपन व्हेन अनदर सेकंड इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, तो दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन सीज दिस रीजन एज ए डिफॉर्म्ड लेटाइस. तो इसको यहाँ पे डिफॉर्मेशन दिखेगी, और यहाँ पे एक फोनोन प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो क्या करेगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो उस फोनोन को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा. तो यहाँ पे भी इंटरेक्टिव इंट्रैक्शन हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो ये भी डिफॉर्म रीजन को देखेगा. तो जो फोनोन यहाँ से इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन दैट विल एब्जॉर्ब दैट फोनोन. देन द नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट दैट बोथ दिस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड जो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दे इंटरेक्ट्स बाय ए फोनोन एंड देयर इंट्रैक्शन इज अट्रैक्टिव. सो जैसे मैंने बोला कि ऊपर मैंने दोनों पेयर क्या करते हैं, पॉजिटिवली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो देयरफॉर द नेट इंट्रैक्शन इज अट्रैक्टिव. इंटरमीडिएटरी इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्स ए फोनोन. फोनोन की वजह से डिफॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व दैट फोनोन. सो देयरफॉर नेट इफेक्ट और नेट interaction is attractive. So therefore net effect is that two electrons have exchanged that momentum through an interaction involving phonon as intermediary. So we can say that the interaction between these two electron is
attractive. So एक इलेक्ट्रॉन है एक है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन किसकी वजह से हो रही है? फोनोन की वजह से हो रही है. ये फोनोन है हमारा, दिस इज फोनोन. सो दिस इज नोन एज योर कूपर पेयर, बिकॉज इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है? अट्रैक्टिव है. देयरफॉर दिस फॉर्म्स ए कूपर पेयर. एंड जो यहाँ पर नेट इंट्रैक्शन हुई है, पहले इलेक्ट्रॉन डिफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से फोनॉन प्रोड्यूस हो रहा है. मींस इट इज प्रोपोगेट हो रही है, मतलब क्रिस्टल में मोमेंटम आ रहा है. मोमेंटम मींस मोमेंटम को कैरिड वे कैसे हो रहा है? वो फोनॉन की वजह से, फोनॉन की टर्म में कैरिड वे हो रहा है. तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट सेज दैट इट सीज एज ए डिफॉर्म्ड रीजन एंड इट विल ऑब्जॉर्व दैट फोनॉन. देयरफॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन कैसे होगी? दैट इज अट्रैक्टिव ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ दैट फोनॉन. सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा फोनॉन, और सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसको ऑब्जॉर्व करेगा. सो इस नेट इंट्रैक्शन को मैं इसका वेव डायग्राम से एज्यूम कर सकता हूँ. जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है के, इसका वेव वेक्टर है के, एंड ये आ रहा है फोनॉन ऑब्जॉर्व एमिट कर रहा है. दिस इज फोनॉन विच इज हैविंग वेव वेक्टर क्यू. एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन दैट इज हैविंग वेव वेक्टर के डैश. तो ये क्या होगा? ये एमिट करके चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन माइनस के, क्योंकि एमिट कर रहा है तो माइनस के. एंड दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस विल अब्जॉर्ब दिस फोनॉन. सो दिस डायग्राम, यू कैन से दिस फाइनमैन डायग्राम. फाइनमैन डायग्राम है, ये वेव डायग्राम है. सो दिस फाइनमैन डायग्राम सम्स अप द होल नेट इफेक्ट विच इज टेकिंग प्लेस हेयर. जो मैंने डिस्क्राइब किया, दैट इज this phenomena is described by this wave diagram और फाइनमैन डायग्राम. कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो क्या कर रहा है? डिफॉर्म कर रहा है, फोनॉन प्रोड्यूस कर रहा है और एमिट कर रहा है. फोनॉन एमिट किया उसने, फोनॉन एमिट हुआ. एंड दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, ये क्या रहा है? फोनॉन अब्जॉर्व कर रहा है. और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी? इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? दिस बोथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स बाय दिस इंटरमीडिएटरी फोनॉन. फोनॉन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इस डिफॉर्म्ड रीजन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. सो दस we can say that the interaction between the two electron by phonon needs the Coulomb repulsion, exceeds the Coulomb repulsion. क्योंकि इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन जनरली क्या होती है? रिपल्सिव होती है. पर इस फोनोन की वजह से क्या हो रहा है? दे आर एक्सीडिंग द रिपल्सन एंड दे आर getting attracted to each other by this phonon, and this pair of electron is known as your Cooper pair. ये भी कूपर पेयर है सिंपल, और ये डायग्राम से दिस इज नोन एज योर कूपर पेयर. So now this whole process is virtual, and the phonons involved in their process is known as your, these are your virtual phonons, and they have very short lifetime. Virtual phonons and have short lifetime, and energy may not be conserved, which is according with the uncertainty principle. So now the binding energy of these Cooper pair is given as delta is equal to, this is BCS theory, 2h cross omega d, that is Debye frequency. This is Debye's frequency, and divided by exponential of, that is 1 upon nf into v minus 1. And this amount of binding energy is approximately equal to the energy gap of superconductor. This is the binding energy of your Cooper pair as given by BCS theory, where this is Debye's frequency, this is number of field states in your Fermi state at Fermi level, and this is the attractive potential of
these Cooper pairs. And now this binding energy of Cooper pair is also known as energy gap, which is of the order of this. Binding energy is also known as your band gap, which is approximately equal to 10⁻³ electron volt, which is less than the energy of free electron. This is less than the energy of free electrons. And since the superconductivity is due to the Cooper pair, which have the binding energy only of the order of 10 Kelvin, hence the superconductivity is a low temperature phenomena. That means ये Cooper pair का forms होंगे. These Cooper pair will form at your very low temperature. You can say that at absolute 0 degree temperature, and at the critical temperature these Cooper pair vanishes. ये Cooper pair क्या हो जाएंगे? Cooper pair मतलब critical temperature पे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. Means this pair will vanishes at your critical temperature. So although these two electrons are bound in Cooper pairs, but they are very weakly bound. कि मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होगा Cooper pair जो बॉन्डेड होंगे, they are very बॉन्ड क्या होगा इनके बीच में? वेरी वीक होगा. एंड दिस इज एंड दे आर इन कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू पेयर्स. मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पेयर ब्रेक हो रहे हैं, फिर दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक पेयर बन रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर बन रहा है. तो क्या होगा? ये Cooper पेयर क्या होगा? दीज Cooper पेयर्स इन दीज Cooper पेयर, मतलब मान लीजिए Cooper पेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्पिन अप होगा, और दूसरे का क्या होगा? स्पिन डाउन होगा. सो द Cooper पेयर इन्वॉल्व्स द स्पिन अप इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन. So the total spin of pair is 0. So Cooper pair में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, both one have spin up and one is spin down. So therefore total spin of Cooper pair is 0. That means Cooper pair is 0. So therefore this Cooper pair behaves as a बोसोन, बिकॉज जो पार्टिकल होते हैं बोसोन, दैट इज उनकी स्पिन क्या होगी? इंटीग्रल स्पिन होती है 0 1 2 3. और जो फर्मियन है इलेक्ट्रॉन, दैट दे हैव हाफ स्पिन, इंटीजर हाफ स्पिन. सो देयरफॉर दीज Cooper pair बिहेव्स एज ए बोसोन. सो दे विल फॉलो द Bose-Einstein statistics. दैट मीन्स मैनी पेयर कैन लिव टुगेदर. सो जैसे जो क्वांटम मैकेनिकल रिफाइनमेंट डायग्राम है, सो दीज Cooper pair have equal and opposite momentum. So therefore total momentum भी क्या होगा? टोटल linear momentum क्या होगा पूरे पेयर का? That will also is equal to 0. So they will have net momentum when there is no current flowing in the superconductor. So thus we can say that if all these pairs of Cooper pairs in the superconductor have constant momentum, so then there will be process of breaking of old pairs and forming of new pairs in the superconductor. So therefore there will be large number of pairs will be present in the superconductor. So therefore all these pairs are in the same ground state, because same momentum होगा तो energy होगी, same momentum energy होगी. So therefore these all pairs will be form the same ground state and form a single large giant system. So therefore a current in a superconductor involves the whole system of pairs. So therefore each pair is now having non-zero momentum. So to alter such a current means the correlated states of motion of all electrons must be changed. So this requires a very large amount of energy, and as a consequence the current persists indefinitely if undisturbed. मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब उस सुपर कंडक्टर में क्या होगा? देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ Cooper पेयर होंगे, और उनके मैंने क्या बोला, उनका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम मतलब कांस्टेंट होगा. तो दे विल फॉर्म ए ग्राउंड स्टेट. तो सबका मोमेंटम सेम होगा, तो पूरी एक सेम स्टेट फॉर्म करेंगे. सारे लार्ज पेयर सारे एक ही मोमेंटम स्टेट क्या करेंगे? एक मोमेंटम स्टेट में होंगे, मतलब एक ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, और उस ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे हमारे Cooper पेयर होंगे. अब उस Cooper पेयर को हम अगर उस पेयर होंगे, एक ही पेयर में होंगे, तो इसमें मूव करेंगे. सो देयरफॉर देयर विल बी करंट इन सुपरकंडक्टर, बिकॉज मूव कर रहे हैं. लोड जो पुराने पेयर हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, न्यू पेयर क्या हो रहे हैं? वो फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है?
एक पेयर का मोमेंटम दूसरे पेयर जब ब्रेक हो रहा था वो मोमेंटम दूसरे जो न्यू पेयर्स हैं वो एब्जॉर्व कर रहे हैं, उस तरह से न्यू पेयर बन रहे हैं और ओल्ड पेयर क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। वहाँ पे करंट भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से फ्लो हो रहा है। सो नाउ this is all about your Cooper pair. So now we will discuss the that is BCS ground state. जो मैंने ground state बोला कि सबका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, there will be a ground state. Now we will discuss what is the BCS ground state and the existence of the band gap. So now अगर हम बात करें सिंपल फर्मी गैस की, जो फर्मी गैस में क्या होगा, सिंपल कंडक्टर मतलब सिंपल फर्मी गैस की बात करें नॉर्मल मेटल में, तो इसमें क्या होगा कि जो सिंपल फर्मी गैस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो दे विल नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। बट इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी केस में हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय एब्जॉर्बिंग द फोनोन, सो देयरफॉर दे विल फॉर्म द कूपर पेयर। और उस कूपर पेयर की वजह से क्या होगा, वहाँ पे सुपर कंडक्टर में क्या होगा, सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना होता है। सो नाउ अगर हम बट इन केस ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग फर्मी गैस, जो सिंपल मेटल हैं सुपर कंडक्टर हैं, उसमें ऑल एनर्जी स्टेट के होंगे फर्मी एनर्जी से। जैसे फर्मी एनर्जी है नॉर्मल कंडक्टर के लिए क्या होगा, नॉर्मल मेटल के लिए ये हमारा फर्मी लेवल है EF। तो इसके नीचे सारी स्टेट क्या होंगी, फील्ड होंगी, और इसके ऊपर क्या होंगी, सारी क्या होंगी, वेकेंट होंगी, वेकेंट। एंड ये क्या है, फील्ड है। ये है नॉर्मल कंडक्टर के लिए। इस नॉर्मल कंडक्टर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, वो दे विल नॉट इंटरेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो दीज ऑल स्टेट ग्राउंड स्टेट इज फील्ड, दिस फर्मी लेवल एंड अबव फर्मी लेवल ऑल द वैकेंट लेवल ऑल द स्टेट्स आर वैकेंट। सो देयरफॉर अब मेरे को अगर क्या करना है, कंडक्टिविटी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा। दिस इज एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। सो देयरफॉर अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे। देयरफॉर दिस रिजल्ट्स इन द कंडक्टिविटी फॉर द नॉर्मल मेटल्स और नॉर्मल कंडक्टर्स। सो नाउ बट इन दिस इज फॉर नॉर्मल कंडक्टर, बट इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन अगर मतलब यहाँ पे है तो वो पेयर्स में है, ऊपर पेयर की टर्म है। इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद ईच अदर attractively and the phonons mediate this interaction। जो हमने पीछे बोला कि सुपरकंडक्टर केस में कूपर पेयर बन जाएंगे, और कूपर पेयर कैसे इंटरेक्ट करेंगे, फोनोन को ऑब्जर्व करके बनेंगे। सो इन केस ऑफ सुपरकंडक्टर दिस फर्मी गैस इज इंटरेक्टिंग फर्मी गैस, सो दस दिस इंटरेक्टिंग फर्मी गैस फॉर्म्स द BCS ग्राउंड स्टेट। सुपरकंडक्टर के केस में क्या होगा, दिस इज नॉर्मल ग्राउंड स्टेट, बट इन केस ऑफ सुपरकंडक्टर दिस इज BCS ग्राउंड स्टेट। So this ground state is separated from the lowest excited state by energy gap Eg, which is the binding energy of the Cooper pair. That is, this is the binding energy of Cooper pair. So BCS ground state में जो हमारा first excited state है, वो ground state BCS ground state से कैसे separate होगा, by this band gap, this binding energy, this energy gap, this, because this is equal to Eg, this is the energy gap between the first excited state and the BCS ground state. So this energy gap is a function of temperature, unlike the energy gap of semiconductor and insulator। कि जो सुपरकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होगा this will be the function of temperature। क्यों होगा, बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा, जो वहाँ पे हमारे सुपरकंडक्टर में फर्मी कूपर पेयर बनेंगे, दैट विल बेनिसिस, और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद सुपर कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सो दस द मैक्सिमम एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑकर्स एट 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कूपर पेयर्स विल बी फॉर्म्ड इन द सुपर कंडक्टर, और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा, वो कूपर पेयर क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, दे विल वेनिसिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट note। Let us write this। So now this is the probability curves, or you can say occupation index of your this non-interacting gas। This is the probability of occupation, मतलब सारी states क्या है, फर्मी सरफेस तक क्या है, सारी क्या है, फील्ड है ये बड़ी। और ये नॉर्मल कंडक्टर के लिए जैसे मैंने बोला सारी फील्ड है, फर्मी सरफेस से नीचे क्या होंगी, सारी फील्ड होंगी फर्मी स्टेट से, और इसके बाद क्या है, सारी ऑक्युपाइड है, सॉरी एम वेकेंट है। दिस probability of occupation मतलब probability 1 का होगी, जहाँ सारी क्या होंगी, फील्ड होंगी। सो इस कर्व में सारी फील्ड होंगी, यहाँ पे क्या होगी, वैकेंट होंगी।
This is at absolute 0 degree Kelvin. This is for normal conductor. But for your superconductor, this is the BCS ground state, and it is separated from first excited state by your energy gap. So therefore we can say from this figure, we can say that the formation of this BCS ground state has more kinetic energy than Fermi state. BCS ground state, this has more kinetic energy than this Fermi state. Fermi state से ज़्यादा इसकी kinetic energy, kinetic energy Fermi state से ज़्यादा इस BCS ground state की. So what this is not the case, since the attractive potential energy of BCS state is lower than the BCS state from your Fermi state. कि मतलब देखो यहाँ पे BCS ground state की जो एनर्जी है वो Fermi state से ज़्यादा है. देखो, और ये क्या है तुम्हारा, इधर से इधर क्या होगा, बैंड गैप. दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड इट इज सेपरेटेड ग्राउंड स्टेट बाय योर एनर्जी गैप. सो बिकॉज ऑफ दिस योर BCS स्टेट इज मोर स्टेबल, और इस BCS स्टेट में क्या है, हमारे कूपर पेयर्स हैं सारे. सो दस द ऑक्यूपेशन ऑफ वन पार्टिकल ऑर्बिटल्स इन BCS ग्राउंड स्टेट नियर EF आर ऑल फिल्ड like Fermi gas distribution for some finite distribution. However, in BCS ground state, one particle orbitals are occupied by, सारे occupied किससे हैं, Cooper pairs हैं. But Cooper pairs they are behaves as bosons. So Cooper pairs में क्या होगा, एक spin up और इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा क्या होगा, spin down. मतलब एक फर्स्ट का मोमेंटम क्या होगा, k, दूसरे का क्या होगा, -k. So we can say that if an orbital with wave vector k and spin up is occupied, then the orbital with wave vector k minus k spin down is also occupied. And if k, अगर हमारा k माना हमारा, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इट वेकेंट, देन दूसरा क्या होगा, वेकेंट होगा. तो कूपर पेयर में यही होगा. सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, BCS ग्राउंड स्टेट. हमने कंपेयर किए तो जो BCS ग्राउंड स्टेट है सुपर कंडक्टिविटी की, वो ज़्यादा स्टेबल है इधर से. सो इन दिस, इस ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल में क्या होंगे, नॉन इंटरेक्टिंग फर्मी गैस मीन्स इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिंग करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बट इन दिस BCS ग्राउंड स्टेट सुपर कंडक्टिविटी केस में दे आर कूपर पेयर्स एंड दे आर इंटरेक्टिंग फर्मी गैस में एक दूसरे को क्या रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली, they are forming the Cooper pairs. So thus this forms the basis of the superconductivity, and BCS theory successfully describes the behavior of your superconductivity. So जैसे मैंने बोला था कि सुपरकंडक्टिविटी क्या होगी, 0 डिग्री केल्विन पे कूपर पेयर मैक्सिमम होंगे, और जब भी टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर को अप्रोच करेगा तो कूपर पेयर सारे क्या जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी सुपरकंडक्टिविटी विल बी लॉस्ट. सो the critical temperature according to the BCS theory is given by this formula 1.14, that is theta. Theta हमारा Debye temperature, theta d Debye temperature, and this is exponential of 1 minus 1 divided by u, that is attractive interaction energy, electron interaction energy, DEF, that is the density of filled orbitals for u DEF is less than, will be less than 1. This is the formula for the critical temperature according to the BCS theory.